Assalamualaikum everyone. In today's lecture, we are discussing that how these adrenocortical hormones are synthesized and how their secretion will occur. First of all, we discuss three layers of adrenal cortex and what types of hormones are secreted by these three layers. First of all, we have a first layer that is zona glomerulosa, and we have second layer of elongated cell that is showing by the pink color, and that is zona falciculata, and then we have this free space. This is called as zona reticularis, and then the last layer that is called as renal medulla. Okay. So now we discuss what type of hormones are released by these layers. Okay, first of all, I have made a table for you. First of all, we have these zones written here: glomerulosa, falciculata, and reticularis. What hormone class? Actually, zona glomerulosa release mineralocorticoids hormone. Zona falciculata release glucocorticoid hormones, and the zona reticularis release adrenogen. Okay. Now, mineralocorticoids hormones are the aldosterone hormone which are released by them. Glucocorticoids release cortisol, cortisone, corticosteroids, and some androgen and the estrogen are released. Androgen release DHEA means dihydroepiandrosterone, and it also releases small amount of estrogen and the glucocorticoids hormones and androstenediones. Okay, now what type of stimulants act, and then this hormone production increases. Actually, for the release of aldosterone, and angiotensin factor is included in our plasma. It releases, and the potassium affected. Stimulus for the glucocorticoid and androgen is ACTH and CRH. These stimulates the release of cortisone and cortisol, corticosteroids, and also small amount of androgen and estrogen. While our zona reticularis release androgenic hormones, and in this androgenic hormones release only one, two, three, four types of hormones. It releases dihydroepialdosterone, aldosterodiones, estrogen, and the small amount of glucocorticoid is also released by androgen. Now we see these types of layers. Actually, zona glomerulosa, this is represented by green color, and it is thin layer of sand. Actually, it consists of only 15% of our adrenal cortex. ठीक है, ये सिर्फ 15% होता है. And the hormone released by it aldosterone, which is mineralocorticoid in nature, and it has an enzyme which is aldosterone synthase. This aldosterone synthase enzyme help in the production of aldosterone, and not the important point that aldosterone hormone is totally released by zona glomerulosa. It is not going to release in any other layer. ठीक है, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरल का आपस में थोड़ा सा कनेक्शन होता है, रेटिकुलरिस से भी थोड़ा सा कनेक्शन है इन लेयर्स का, लेकिन एल्डोस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ जोना ग्लोमेरुलोसा ही सिक्रेट करेगी, और क्योंकि इसके पास एंजाइम है एल्डोस्टेरोन सिंथेस, एंड द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन इज एंडोजाइसिंथिन 2 which is a factor in our blood, and potassium. ठीक है. Now, what are important points for the zona falciculata? Actually, it is the middle and the widest zone. It has some elongated type of cell, so it is more wider than zona glomerulosa and the reticularis. Okay, it composed of 75% of our adrenal cortex, and the hormone released by it are cortisol, corticosterone, cortisone, and small amount of estrogen and androgen. ठीक है. And what is stimulus? Stimulus is ACTH and CRH. ठीक है. Now we move on to the zona reticularis, which is the last layer of our adrenal cortex. Now it is the innermost zone, and it is also very small, less percentage than the zona glomerulosa. Now hormones क्या है इसके? It release DHEA, dihydroxy epi aldosterone, and small amount of aldosterodiones also release, and it also release small amount of glucocorticoid, estrogen, and stimulated by ACTH and CRH.
ठीक है. Now we move on to the next topic. Yeah, that is synthesis, means how these hormones are synthesized by our adrenal cortex. Actually, all these hormones are steroid in nature. So, if we see a hormone is steroids in nature, then this hormone is insoluble in water. It only can soluble in our lipid. So, its action is very slow. Okay? And the raw material for the synthesis of this hormone is cholesterol. So now we discuss how this cholesterol is produced in our body, and then from how cholesterol all these steroidal hormones are produced. So अब हमने इनकी प्रोडक्शन देखनी है, इनकी स्टिमुलस देखना है, किस तरह स्टिमुलेट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इनका कैसे हो रहा है, ये हम सारा देखते हैं. नाउ द स्टेरॉइड्स हार्मोन डिराइव किससे हो रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल से. नाउ वेयर कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस एंड हाउ and what type of factors are included in the production of cholesterol. First of all, our cholesterol is needed by our adrenal cortex cell. So our cholesterol is produced by adrenal cortex cell, but a very small amount of cholesterol is produced. Actually, only 20% of cholesterol is produced by adrenal cortex, while the 80% of cholesterol is needed by our body. And this 80% of cholesterol came from low density lipoprotein LDS. Okay, what is LDS? Actually, LDS is only the high concentration of cholesterol. What will happen? Actually, all these LDS came from our food, the food we eat, which we eat. So when this LDS is flowing through our blood vessel, through our plasma, so this LDS diffuses out into the interstitial fluid. Okay. Then after moving to the interstitial fluid, this LDS attach with the adrenocortical cell, and the adrenocortical cell has a receptor on its surface. This receptor is called as coated peptides. After the attachment of LDS with these coated peptides, actually endocytosis process occur. This LDS vesicle move inside the cell, and then the lysosomal enzyme is present in every cell. These lysosomal enzyme act on this LDS and convert it into the cholesterol. So in this way, our cholesterol is produced in our body. So all these terms are explained in the written form. Now we see how the stimulus for the cholesterol production came. Actually, our body cholesterol production is sensed by ACTH, and then this ACTH increase the synthesis of steroids, and due to the increase in steroids, actually our adrenal cells increases, they improve their texture, and the receptor present on those adrenal cortex become activated, and then enzymes are released which increase the production of cholesterol in our body. And if when the cholesterol increases, the steroidal hormone production increases, and when these steroidal hormones production increases, then they maintain the concentration of various minerals, various glucose, and various things in our body. Okay. Now, we see the production of cholesterol occur in the aldocorticoid cells. Now, from these cells, this cholesterol has to transfer into our blood for the production of steroidal hormone. So, how they transport actually feedback mechanism is responsible for the transport of cholesterol in our body. Okay, now where the synthesis of steroidal hormone. अब हमने ये पढ़ लिया कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ वी डिस्कस हाउ दिस कोलेस्ट्रॉल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, क्योंकि आवर मेन पर्पस इज टू प्रोड्यूस स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड टू स्टडी देयर फंक्शंस. So before studying their function, we have to discuss how they are produced. So first of all, what happened after the production of this cholesterol? Actually, this cholesterol enter into our mitochondria and the endoplasmic reticulum. Actually, mitochondria and the endoplasmic reticulum has an enzyme which is called a cholesterol demolase. Due to this enzyme, our cholesterol is converted into prelonin. Actually, this prelonin is responsible for the production of all type of steroidal hormones which are being produced in our adrenal cortex. Now, which enzymes are involved in that process and how they produce all the types of hormones? Now discuss that.
This is a graph. We see that cholesterol is converted into prelignin in the presence of cholesterol demolase enzyme. Now, for the production, we see here one type of hormone is that producing, another hormone is that which is produced, another hormone main hormone. These terms are नॉन बायो ओके, हम इनको पहले डिस्कस करके आ चुके हैं. तो ये चार टाइप्स के हार्मोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं इस कोलेस्ट्रॉल से, और इस कोलेस्ट्रॉल ने सबसे पहले प्रीलॉग्निन में कन्वर्ट होना है. प्रीलॉग्निन बनेगा तो ये चारों हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना. सो कोलेस्ट्रॉल डिमोलेस के प्रेजेंस में प्रीलॉग्निन बन गया. देन प्रीलॉग्निन अटैच विद द एंजाइम 17 हाइड्रोलेज. अब ये 17 हाइड्रोलेज के साथ कंबाइन हुआ है तो क्या बन जाएगा, 17 हाइड्रोलेज प्रीलॉग्निन. Okay, then in the presence of ligase enzyme, this 17 hydrolase prolongase converted into the DHEA. और DHEA क्या है ये आपको पहले पता है. Now this prolongin converted into the progesterone in the presence of 3-beta HSD. What is 3-beta HSD? This is 3-beta hydroxy steroid dehydrogenase. इसकी प्रेजेंस में प्रोजेस्टेरॉन बन गया. देन द प्रोजेस्टेरॉन combined with the same hormone that is given here and produce the same product. After the production of same product, this ligase enzyme combine and the aldosterone diones, which is what is nature. Actually it is what, and रेटिकुलरिस से रिलीज होता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन है ये, एंड्रोजेनिक नेचर है. एंड व्हाट इज ADH? इट इज़ आल्सो एंड्रोजेनिक, ठीक है. ये दोनों हार्मोन लास्ट लेयर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. अब कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन सबसे पहली लेयर से प्रोड्यूस हो रहा है और ये दूसरी लेयर से फेसिकुलेटर से प्रोड्यूस हो रहा है. Now this progesterone is actually converted into the alpha D hydroxycortisone, and this 17 hydroxyproline is converted into the 11 deoxycortisone. All of these are converted into the cortisterone and the cortisol. This corticosterone is converted into the aldosterone, okay, in the presence of that enzyme, okay. So इन enzyme के presence में हमारा cholesterol 3-4 टाइप्स के enzymes में convert हो रहा है. ADH में, aldosterones में, cortisol में, aldosterone में. So all types of hormones are produced by our cholesterol. Now we see an important property of hormones. We see that all these hormones, अगर ये हार्मोन्स हमारे ब्लड में ऑल टाइम प्रेजेंट रहें और अपना फंक्शन इसी तरह ही परफॉर्म करते रहें तो हमारी बॉडी मेंटेन नहीं रहती. एक्चुअली हमें इन हार्मोन्स को डिग्रेड भी करना होता है और हमें इनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखने के लिए कि ताकि ये हार्मोन्स अपने टारगेट सेल पे जाके ही इफ़ेक्ट करें, कहीं और जाके अपना गलत इफ़ेक्ट ना कर दें, ठीक है. हमें जहाँ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम करनी है वहीं पर कम करने के लिए हमने हार्मोन भेजना है. सो उस हार्मोन को चाहिए कि वो वहीं पर जाके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम करे, बाकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इफ़ेक्ट ना करे. सो इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं ये बाइंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से. एक्चुअली 90 to 95% ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाइंड विद द ग्लोबुलिन टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड इट आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसकोटिन, ठीक है. एंड द 60% ऑफ आवर एल्डोस्टेरॉन कंबाइन विद द प्लाज्मा प्रोटीन वाइल द 40% ऑफ एल्डोस्टेरॉन कैन रिमेन एज फ्री. सो अब हम इनकी हाफ लाइफ डिस्कस करते हैं. एक्चुअली जो कोर्टिसोन है इसकी हाफ लाइफ है 60 to 90 मिनट्स इन आवर बॉडी, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ थोड़ा कम रखना ही हमारे लिए बेहतर है. और एल्डोस्टेरॉन की हाफ लाइफ 20 मिनट्स है. सो वाई देयर इज़ अ डिफरेंस इन द हाफ लाइफ ऑफ बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स एंड क्यों है इस तरह से. एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कोर्टिसोन है 90 से 95% कोर्टिसोन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड है. सो अगर जब तक वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड है वो सेव है. और लेकिन जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है वो 60% से प्लाज्मा प्रोटीन से कंबाइन होता है और 40% फ्री होता है. सो कम्बिनेशन और फ्री होने की वजह से ये हमारा सही तरह से काम नहीं करता है और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
फिर नहीं होती है इसकी। सो इस वजह से एल्डोस्टेरॉन की हाफ लाइफ से 20 मिनट्स है। सो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। अब मेटाबॉलिज्म किस तरह हो रही है, हम ये जल्दी से कहते हैं। डिग्रेडेशन होती है हमारी इन एड्रिनल हार्मोन की, इनको डिग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं डिग्रेड करेंगे तो हमारी बॉडी से इनको निकालना भी है ना, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में रह नहीं सकते। तो एक्चुअली दिस मेटाबॉलिज्म इज अकरिंग इन आवर लीवर। ओके, हमारा लीवर इसका रिस्पॉन्सिबल है। और डिग्रेड दो चीज़ों से हो रहे हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड और सल्फेट से। एक्चुअली हमारे ये हार्मोन्स इन दोनों के साथ कंजुगेट्स बना लेते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। 25% ये कंजुगेट्स बाइल में जाके हमारा फिसिस के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, वाइल 75% कंजुगेट लीवर में जाके हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद ये प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते हैं, लेकिन फ्री फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं और फिर किडनी से यूरिन की जगह आउट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन हमने इसकी डिस्कस करनी है एल्डोस्टेरॉन और कोर्टिसोन की, ये दो मेन है हमारे हार्मोन्स ना। सो एल्डोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 6 नैनोग्राम्स पर 100 मिलीलीटर है। पर डे में 50 माइक्रोग्राम्स रिलीज़ होता है। और इसका जो ड्यूरेशन है रिलीज़ होने का, वो डिपेंड करता है किस पे, सोडियम और पोटाशियम पर। जबकि कोर्टिसोन 12 माइक्रोग्राम रिलीज़ होता है पर 100 ml, 15 से 20 मिलीग्राम पर डे रिलीज़ हो रहा है। और कोर्टिसोन ज़्यादातर मॉर्निंग में रिलीज़ होता है, इवनिंग में कम रिलीज़ होता है। सो हमने इनकी कंसंट्रेशन डिस्कस की, इसका मेटाबॉलिज्म, इसकी सेंसेस, इनकी नेचर, इनका स्टिमुलस क्या है। और हमने इनका देखा कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, किस किस तरह के स्टिमुलस के रिजल्ट में वो इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। और हमने इनका पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड पार्ट में हम इनकी एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सो आपने उन पार्ट्स को भी ज़रूर वॉच करना है, उनमें भी मैं इसी तरह से आपके लिए नोट्स बनाऊँगी। सो कीप वॉचिंग and don't forget to like, subscribe and this channel. Thank you very much.